Now it is recording, right? So, unit number 1, your semester is 8th. I write here EGI 8th sem, right? So, we begin our lecture with harmonic functions. Harmonic functions. So, we start with analytic function. We have studied in analytic function in 7th semester, right? And all right, let f of z, which we write u plus iota v, be an analytic function, right? The analytic function. Then I can write derivative of this function as, you know, I can differentiate with respect to x or with respect to y, but we name it a derivative along any direction. It should be unique. That is the method we are following, right? Or I can also write f dash z derivative as माइनस आयोटा, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई करता हूं तो वी गेट दिस फॉर्म, ठीक है। और एक्स से करता हूं ऐसा आएगा, वाई से करेंगे ऐसा आएगा, ठीक है, राइट। देन अगेन फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर, I take second derivative, right? So I write again second derivative as I have taken here with respect to x. So I take it also with respect to x. With respect to x, there is no change, right? And I can write it as okay, students. We applied it on first condition here, this condition here I applied it, ठीक है। तो x से दो बार अप्लाई करा हमने डेरिवेटिव को, तो इट इज जस्ट लाइक दिस एंड आई नेम इट नंबर 1, राइट। तो इक्वेशन नंबर से एक चीजें क्लियर हो जाएंगी। आल्सो I apply another way, this with respect to y will write z minus iota dy है ना, into this f dash z. Again I write the value of fz with respect to y. This was minus iota. You can see above equation, right? And I combine it, so it becomes, this is minus minus plus iota into iota, iota square. So it is minus the square y square, right? I name it equation number 2. Okay. Clear? But both of the derivative, first derivative is with respect to x, the other derivative is with respect to y. Okay, so basically both are the derivatives. You can see here, this is also second derivative, this is also, and we have studied all these things when we have a function of complex variable. It has two components, real component and imaginary component, and when we differentiate, we can differentiate either with respect to real axis or with respect to y axis. We get the same value, right? Because you have studied in your calculus also that function of two variable, we get the same limit along any direction. So these are the particular directions. So both are the second derivatives. So if I compare, they must be equal, right? So this is also double derivative. So I write here on comparing first and second,
we get, see, we get first one is this and second one is, you can see here, देख लीजिए, ठीक है, ये भी सेकंड डेरिवेटिव, बट वैल्यूज अलग अलग आई हैं क्योंकि हमने एक्स और वाई से किया, अलग अलग रियल नंबर हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। एनी डाउट्स जहां तक किसी को, एनी डाउट स्टूडेंट्स? No, sir. So this implies, I can say this implies plus तो माइनस है तो I bring it on the other side, it becomes plus, so it becomes plus, right? Here f is analytic function, right? So this equation is valid for any analytic function abstract, right? So I say which is valid for any analytic function abstract. So it is valid for any analytic function abstract. Okay. And this is basically also called with Laplace transform, right? Also, since I write since f of z is equal to u and u is a function of two variables, you know, plus मैं थोड़ा इसको और साफ लिखता हूँ, since your function f of z, okay, is uxy plus iota vxy, right? Okay, and this is analytic. This is analytic function, ऐसा लिखा जाता है आप लोगों का, is analytic function. So I name this equation as equation star. So see, I can put this function value of f here. If I differentiate with respect to x, so I will get del square u upon del x square plus iota del square b upon del x square, है ना? Same with y, del square u plus del y square plus iota del square b plus del y square. Okay, so this is analytic. Okay, and equation star gives, show that show that this equation shows that here I write this way, real component, use real component, so that real and imaginary components must satisfy, right, the equation. इसको मैं differential equation भी बोल सकता हूँ. Why? Because here we have derivatives. Differential equations, same differential equations. देखो अब आपका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे इसका, so you will find that it satisfies the differential equations. You can write here. And ठीक है स्टूडेंट्स, लिख सकते हैं. What we have done, हमने f का वैल्यू जो जैसे आप देखो ना इस इक्वेशन में f का वैल्यू जो पुट कर लो तो आपको
यू एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा बी एक्स स्क्वायर, आयोटा वाले अलग कर लोगे तो आपको जो इक्वेशंस मिल जाएंगी दो जो हम लिख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, Yes. ठीक है, राइट। सो दिस इक्वेशन shows that u and v, which are real and imaginary components, they are also harmonic. Earlier we proved this concept in your 7th semester by using CR equations. I think you know that, right? But here I am not using CR equation and doing it in that way. ठीक है, so जहां पे आपके जो फंक्शंस हैं ये भी सेम इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। So thus I can say thus u xy and v xy also satisfy what do we say it, not satisfy or harmonic, we can say, right? Or harmonic functions, they are harmonic functions। ठीक है, now we come to the definition। हार्मोनिक फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? अभी जैसे मैं इसको पूछ रहा था बच्चे को, we write the definition of harmonic function, you know, but I think before that I need to discuss some other things with you. I need to discuss other things, but we have studied that every analytic function is harmonic, right? Second thing, we have studied that real and imaginary components of an analytic function right, of analytic function are harmonic, right? Then next is every harmonic function analytic? राधिका आप बताओ, is every harmonic function analytic? राधिका, राधिका आप सुन रहे हो बच्चा? No, sir. हाँ, No, sir. Every अब इतना harmonic लेट क्यों function is बोलते हो not बच्चा लोग? analytic. आई थिंक आप लोग क्लास नहीं पढ़ रहे हो ध्यान से क्या? Why you are so मैं delay? आपका कमेंट इतनी डिले क्यों होता है? मैं पहले से ही बोल रही हूँ, शायद नेट नहीं चल रहा होगा। नहीं, अभी 4G चल रहा है, अभी ये एक्सक्यूज नहीं चलेंगे किसी का नेट नहीं चल रहा है। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे जियो का टावर ही नहीं आते हैं। क्यों रहते हो वहां पे जहाँ टावर नहीं हो? जियो के टावर नहीं आते हैं। आप दूसरा सिम लो ना बच्चा जिसमें आते हैं, जैसे नेट होना चाहिए आप लोग। दिस इज नॉट एक्सक्यूज, नहीं है, इट इज नॉट। व्हाई? गिव एग्जांपल। एनी एग्जांपल हाउ यू कैन प्रूव दिस?
नो एग्जाम्पल। नेक्स्ट आई राइट इज, इसका आंसर आ गया आपका नो। ठीक है, नाउ आई राइट नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ जेड इज इक्वल टू जेड कंजुगेट, ठीक है, हार्मोनिक एंड एनालिटिक, चेक करना आप लोगों ने, क्या जी हार्मोनिक और एनालिटिक दोनों है? ठीक है, तो इस एग्जांपल से मे भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, हमने अभी तक पढ़ा है, राइट। अनदर थिंग you have studied in your previous semester, that is CR equations, right? This is just a review, मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ, we may use those things here also। ठीक है, CR equation says if this fz is equal to u plus iota v is analytic function, then ux is equal to vy and uy is equal to minus vx, right? We have studied this। ठीक है, sorry, all right, this is CR equation, but thereafter we also studied that converse of this result is not true। ठीक है, इन जनरल इसका जो कन्वर्स होगा वो ट्रू नहीं है। ट्रू मीन्स इफ सम फंक्शन सेटिस्फाई CR इक्वेशन, right, the function may not be analytic। if function is analytic, it always satisfies CR equation। the converse means sufficient condition। if function satisfies CR equation, it may not be analytic। क्या एग्जांपल आएगा इसके लिए? कौन बताएगा बच्चा? What is the example for this? Simplest example, anyone? See any example? हर्षा बताओ। हर्षा से याद नहीं है अभी। नहीं यार, भूल गए, सेमेस्टर खत्म, सब भूल गए हैं। ये ऑनलाइन एग्जाम होने का नतीजा, सेंसिटिविटीज नहीं पढ़ा आप लोगों ने। वंशिका तुम बताओ। वंशिका सर याद नहीं आ रहा, सर याद नहीं आ रहा। हेलो, हाँ जी हाँ जी, सर याद नहीं आ रहा। याद नहीं है? याद कैसे होगा आप लोगों को? याद करना बहुत मुश्किल काम है। नाउ आई गिव ए क्वेश्चन फॉर दैट, इज एफ जेड इज इक्वल टू जेड कंजुगेट। जेड कंजुगेट समझ रहे हो क्या है? एक्स माइनस आइटा वाई, satisfy CR equation? Number one question. Question 2 is fz is equal to z conjugate एनालिटिक फंक्शन। ये जो मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन, ये आपको करने हैं, ठीक है, ये जहां पे नहीं रहने चाहिए। इनका आंसर दोगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आंसर मैंने दे दी है, बट यू हैव टू वेरीफाई दीज थिंग्स। ठीक है, सो आफ्टर दैट कन्वर्स ऑफ CR इक्वेशन कब होल्ड करता था? एनी स्टूडेंट?
When does this converse hold? When does this converse hold? नहीं पता है, ऑनलाइन एग्जाम दिए आप लोगों ने। गुड। सिमरन तुम बताओ। सर वो फंक्शन सिमरन? कंटिन्यूअस भी होगा सर, अगर वो फंक्शन हाँ जी, क्या होगा? कंटिन्यूअस भी होगा तो कंटिन्यूअस बस नहीं, मतलब अगर वो तो कंटिन्यूअस भी होता नहीं, उसके जो पार्शियल, उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस होंगे। यस, सी द रिजल्ट। लेट f of z which is equal to u plus iota b, ठीक है, they be defined in a domain D, and let basically u is a function of x and y, right? And u and v, I should write this way, they have continuous partial derivatives, इसको partials भी बोलते हैं हम। partial derivatives means u and v must have partial derivatives, right? इनके जो derivatives हैं continuous partial derivatives होने चाहिए। that satisfy their equations। से इक्वेशन क्या आ गई? ux is equal to vy and uy is equal to minus vx. Then your function fz is analytic in D. तो दिस इज द कन्वर्स। ये रिजल्ट्स आप लोगों को मालूम होने चाहिए, ठीक है? आगे चलने से पहले आपको ये रिजल्ट्स अच्छी तरह से मालूम होने चाहिए, और जो जो मैं आज करवा रहा हूँ मैं कल आप लोगों से ये चीजें सुनूंगा, पूछूंगा, ठीक है? सो इसके बाद ठीक है, ये सब हार्मोनिक फंक्शंस के रिजल्ट थे। दिस इज जस्ट बिगिनिंग इट इज, ठीक है? तो एनालिटिक फंक्शन हार्मोनिक होता है, हार्मोनिक फंक्शन डी नॉट बी एनालिटिक, ओके? अगर दोनों एक जैसे होते तो अलग से थ्योरी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती आप लोगों को। व्हेन देयर इज अ डिफरेंस only then interest creates and theory develops, okay? So now I define what is analytic function। इसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन अब एनालिटिक फंक्शन जो है ना आपके पास, हार्मोनिक फंक्शन आप वैल्यू भी ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं बनेगा आपको, ठीक है? जो
harmonic function can be a real valued also, no issue in that. Okay, अब आपको जो जो यूनिट 1 हमने करना है ना, इसमें आप लोगों को इसी के साथ डील करना है कि हार्मोनिक फंक्शन। हाँ, इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहता हूँ जो आपने पहले की पढ़ी है, कोई नई चीजें नहीं है। ठीक है, तो अब आपने हार्मोनिक फंक्शन पढ़ा है, हार्मोनिक कंजुगेट भी पढ़ा हुआ आपने, है ना? पढ़ा है? हैव यू हार्मोनिक कंजुगेट स्टूडेंट्स पढ़ा है? चलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। तो मैं अभी डेफिनेशन को नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ और चीजें बतानी है हम लोगों को। लेट यू ये हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन naturally it will be a function of two variables. This तो जब ये हार्मोनिक फंक्शन है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करेगा। ठीक है, इट इज ऑलवेज। Then we have studied that, then I can say there exists an analytic function say f of z. There exists an analytic function f of z for which this u is a real component. Can I say like this? And students, अच्छा लोग ऐसा बोल सकते हैं? आपने हार्मोनिक कंजुगेट निकाले हुए हैं ना? यस सर। आपको जो है मैंने इट डजंट लुक लाइक हार्मोनिक कंजुगेट। स्टूडेंट्स, does it look like हार्मोनिक कंजुगेट? क्या ये वैसा लग रहा है आप लोगों को थोड़ा बहुत? See, you know, here u is हार्मोनिक फंक्शन, इट इज गिवन। आपको रियल कंपोनेंट दिया होता था, इमेजिनरी कंपोनेंट निकालते थे, याद है? राइट, सो हियर रियल पार्ट इज गिवन। जहां पे मैंने लिखा देयर एग्जिस्ट एनालिटिक फंक्शन, नेचुरली इफ आई राइट बाय f as u plus iota v, this b is called harmonic conjugate and this f is analytic function where u is a real valued function. So if I get harmonic component, definitely I can find an analytic function whose real component is this given harmonic function u. हमने हार्मोनिक कंजुगेट निकाला है, यही मेथड तो लगाया था हमने, वहां पे सीआर इक्वेशन यूज करा था, आपको अगर याद होगा तो। ठीक है, तो इस थ्योरी को मैं कुछ अलग तरीके से लिखता हूं। सी हाउ आई राइट इट। I write is in the form of a question, or you can say in the form of a theorem. I write if u is harmonic on a simply connected domain, right?
यानी simply connected domain D. Then I will not say that there exists harmonic conjugate. I will say that then there exists an analytic function, right? Analytic function on domain D whose real part is equal to this U जो आपका हार्मोनिक था. ठीक है बच्चों, कैन आई से लाइक दिस? हम लोगों ने हार्मोनिक कंजुगेट निकाला हुआ है, आपको याद होगा. वहां हमने अलग से मेथड फॉलो करा था. हमने वहां लिखा था लेट इट्स इमेजिनरी कंपोनेंट इज v, then f is u plus iota b is analytic, then it satisfies CR equations. याद है आप लोगों को? फिर हमने इस इक्वेशन को लेके, ठीक है, तो v हमें मालूम नहीं था, बट हम जहां से बोल सकते थे कि v और y है डेरिवेटिव है तो इंटीग्रल बन जाएगा, तो ux का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y प्लस कांस्टेंट लिया था हमने, याद है आप लोगों को, राइट? इसके बाद ये वैल्यू आता था, फिर इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में यूज करते थे और इसका वैल्यू निकालते थे. याद है आप लोगों को बच्चा लोग? डू यू रिमेम्बर? यस सर. बड़ी ढीली ढीली आवाजें आती हैं हम लोगों को. खाना नहीं खाया हम लोगों ने. ठीक है, एक आपके पास वो वाला वे है. अनदर वे वी हैव, आई राइट इट, आई राइट लेट g of z is ux. ux means partial derivative. ठीक है, minus iota, I write here uy z. I write this way and I name it as capital U. ठीक है, plus iota I name it capital B. ठीक है, देयर इज कैपिटल लग रहा है, मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ. ठीक है, ठीक है चलो, आई नेम इट लाइक दिस. ठीक है, देन मैं इसमें लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा. ठीक है, देन आई कैन राइट ux प्लस vx, कैपिटल U कैपिटल B लिया. देखो अगर मैं कंपेयर करूं इन दोनों को तो कैपिटल U इसके इक्वल है ना, और v जो है वो माइनस uy के इक्वल है, राइट? तो जब ux करेंगे तो x ऑलरेडी था तो ये हो जाएगा uxx. ठीक है, प्लस ऑलरेडी माइनस में है uy, उसको भी हमने x से किया. ठीक है, व्हाट आई हैव रिटन, मैं इसको थोड़ा और सिंपल करता हूँ, ठहरो. आई राइट इट एज कैपिटल ux माइनस कैपिटल b बाई uxx किया तो ये uxx हो गया. ठीक है, v को भी जब x से किया तो व्हाट इज दिस, माइनस, फिर माइनस, ऐसे हो जाएगा. ठीक है, वो b को y से किया, ऑलरेडी y था तो ये आपके पास बन जाएगा uxx प्लस b बाई y विच इज योर लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन. तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, क्या आएगा, 0, बिकॉज हार्मोनिक है. ठीक है, अब इसको नंबर 1 दे दो. ठीक है, अगेन अब आप इनका रोल इंटरचेंज कर दीजिए. ux किया था u को y कर दो, वो v को y किया था b को x कर दो, देन इट विल बी ux y हो जाएगा प्लस
माइनस यू बाई एक्स हो जाएगा, तो ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, राइट। अगर आप ध्यान से देखो ये दोनों सीआर इक्वेशन की वजह से कैंसिल हो रहे हैं, है ना। वाई, जहां हम ये बोल सकते हैं जो दोनों मुझे सीआर इक्वेशन बता रहे हैं, लिख सकता हूं मैं ऐसा। कैन आई से हियर 1 and 2 are CR equations, ठीक है, for G is equal to U plus iota B। कैपिटल G और कैपिटल B के लिए क्या है जी, यार CR इक्वेशन देखो कैसे, सी हियर, सी जे भी जीरो आ रहा है, जे भी जीरो आ रहा है, ठीक है। आप किसको कंपेयर करेंगे, हम किसको कंपेयर करेंगे, बच्चा लोग, हम किसको कंपेयर करेंगे, सी, हम इधर से इसको लेंगे और जहां से इसको लेंगे, कंपेयर दिस टू, दोनों जीरो आ रहे हैं ना। अगर मैं कंपेयर करता हूं तो सी हियर क्या आएगा, यू एक्स बी यू एक्स इज ये इक्वल टू जीरो है ना, तो जहां से मिलेगा यू एक्स इज इक्वल टू बी बाई, इस इक्वेशन से क्या मिलेगा, यू वाई इज इक्वल टू माइनस बी एक्स। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, नहीं, नहीं समझ आया, चलो फिर मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। इक्वेशन, सॉरी, इक्वेशन 1 and 2 gives, पहली इक्वेशन जीरो इक्वल आ रही है तो यू एक्स इज इक्वल टू बी बाई आ गया, ठीक है। दूसरी इक्वेशन कहती है यू वाई इज माइनस बी एक्स, ये सीआर इक्वेशन तो हो गई बच्चा, राइट। So therefore I can say my g of z which was equal to, किसके इक्वल था, u plus iota b satisfy CR equations, right। ठीक है, ओके, अगेन here आपका ux uy vy vx they are all continuous, all are continuous। एक मिनट, हाँ बंचू, हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है, देर आर कंटिन्यूस, ठीक है, राइट। कंटिन्यूस है, अब पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस बता सकते हैं इजीली, ठीक है। तो हाउ वी कैन प्रूव दैट, दे आर कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस क्या है, दे आर ऑलरेडी पार्शियल डेरिवेटिव्स, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ दिस कंडीशन अराइव्ड हियर, एनीबॉडी, then this, all right, then I can say g of z, the gz is analytic
in D, right? And we also can find its analyticity. Okay.